मैं पंजाब दियां मुश्किलां, पंजाब दियां प्रॉब्लमां बहुत चंगी तरह जानदा। आई नो द सॉल्यूशंस, पूरी तरह क्लैरिटी है, कोई धुंध नहीं, कोई द्वंद नहीं, कंप्लीट क्लैरिटी। बट वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस हवाई राजनीति। We have to strike reality. We have to come back to Mother Earth. The agenda is most important. ये छुरलियां छड्डण वाली जिहड़ी राजनीति है ना, छुरलियां जिहड़ियां ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, the political blame game, right? Diverting the attention from the real issues, pointing fingers. Sidhu versus Falana. There is no versus Sidhu, boss. Sidhu ते पंजाब वाल खड़ा है, मैं ते पंजाब वाल हां, और मैं तो इको चीज मंगदा, नीति, नीयत ते न्याय। अन्नदाता खुदकुशियां करता है। भगत सिंह दी ओ गल मैनू याद आती है, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, बैरियां ने अज तेरा लुट लिया माल होए। ये यथार्थ के धरातल के उत्ते खड़े होकर चिंतन करन दी गल है। एंड आई वांट टू टेल यू ऑल, लिसन टू मी क्लियरली, I want to tell you that elections are not fought for the next election. Elections are fought for the new generation, for the next generation. We are here to fight for the next generation. For 25 years, year 1997, a system has failed us. A huge debt rupee system, कटोट का चवांग खड़ा साढ़े सामने debt बन के, और नोच नोच के पंजाब नूं, पंजाब दे वाइटल्स नूं खा रहा। क्यों? क्योंकि द स्टेट्स इनकम हैज गॉन टू प्राइवेट पॉकेट्स। निजी जेबां दे विच जा रहा है पंजाब दा पैसा। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल। Governments are by the people, set by our forefathers. The governments are by the people, for the people. फिर 0.1%, 1% का भी 0.1% लोगों दे कोल पंजाब दा खजाना क्यों जावे? Why should 99% of the Punjabis suffer? Why not the last man in the queue? Why not? Why can't we change his lives? Why is he not given the priority? कंबल पूसे च पाया, the bigger the mafia, the more hidden it is. कठपुतलियां बना के, कठपुतलियां फ्रंटमैन अगे खड़े हैं एंड पिछों तुन के कोई मार रहे हैं, पिछों तुन के कोई मार रहे हैं. Somebody is pulling the strings from behind. He is not seen. That's why I say the idea is dubious covert operations. It has been happening for 25 years. And let me tell you, facts will not cease to exist just because they're ignored. They're stubborn things. They'll stab you in the back if you ignore them. So digging for facts is a much better exercise than jumping to conclusions. 1996, what is the debt? A problem है. किन्ना कर्जा सी पंजाब दे सिर दे उत्ते 1996-97 15,250 करोड़. 2001-2 च सरकार बदली 32,496 करोड़. 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਜੇ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਣ ਬਣੂ? ਪੰਜਾਬ ਉਦਣ ਬਣੂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ IAS ਅਫਸਰ ਬਣੂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊ, ਉਦਣ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਪੈਸੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਤੋਂ ਸਾਡੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ?
ये डेवलपमेंट दे विच क्यों नहीं जाते? ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि 100 मूलों की जड़ जी है, 100 प्रॉब्लमां की जड़ जी है वो इनकम है। इलैक्ट्रिसिटी के बिल घटाने हैं, उत्थे पैसे क्यों नहीं जाते? पैसा तो आ रहा है भाई, पैसा तो जा रहा है, पैसा उत्थे ही है, पर हस्पतालों क्यों नहीं जाता? फिर स्कूलों क्यों नहीं जाता? जवाब क्यों जाई जाते हैं? यू सी, ये चिंतन का विषय है। जो समा चिंता च गया कूड़ेदान च गया, जो समा चिंतन च गया ना वो पुण्य की तिजोरी च गया। नाउ these are startling figures that I'm going to talk about. This is a very clear cut thing. The total revenue receipts, जो estimate हुंदा budget का estimate हुंदा of this year was 88,000 crores. 88,000 crores इस साल का बजटरी एस्टिमेट सीगा, ठीक है। और ਉਹਦੇ ਚੋਂ 47,000 करोड़ रुपया ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ और ਉਹਦੇ ਤੇ इंटरेस्ट 19,000 करोड़, 67,000 करोड़ ਸਾਡੀ देनदारी है, टोटल डेट ਦੀ ਜਿਹੜੀ देनदारी है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कोरोना आ गई जी, एंड द इकोनॉमी टुक अ बैटरिंग, द इकोनॉमी टुक अ बैक सीट, सारे धंधे चौपट हो गए, सारे धंधे बंद हो गए। Now the recent figures that have come, the finance minister has given, is that this time now we are 25,000 crores less. Now it is only 62,000 crores. The revenue receipt now comes to 62,000 crores. कमाई है 62,000 करोड़ ते देनदारी है 67,000 करोड़। जावांगे किथे भाई? Where will we go? 67,000 करोड़ देनदारी, इंटरेस्ट मिला के, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। How can we think of development? How can we think of schools? How can we think of colleges? How can we think of the forward movement when this is happening? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? Let me tell you, let me actually throw more light on this subject, because this is the real issue. This is the cause of our backward movement. One step forward, two steps backward, situation awkward, and the cycle repeats itself. You know, this is the real cause. Let me throw light. 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ own tax revenue, I will explain it to you. Everything from GST, from excise duty, from sales tax, from VAT, from stamp duty, from registration fee, from property tax, from VAT on petrol, from road tax, from vehicle tax, from everything is 33,000 crores. And can you imagine a state like Tamil Nadu earns 32,000 crores just from excise? Is there a comparison? Think about it. कि 10-15 हेड्स चों साडे ओन टैक्स रेवेन्यू 33,000 करोड़ रुपया, ते तमिलनाडु कला एक्साइज रेवेन्यू, मतलब कला लिकर रेवेन्यू। मैं नहीं कहना, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि तुसी शराब बेचो, पर जे बेचनी है निजी जेबां च क्यों जावे भाई? इट शुड गो इनटू द स्टेट्स एक्सचेकर। स्टैग्नेंट पूल्स कैच फिल्थ, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। And this is where that ravani is a must. Why should only 0.1% people benefit and 99% suffer? In the last 25 years, and I'm saying it categorically, last 25 years, many states have gone from 1,500 crores to 32,000 crores to 20,000 crores to 14,000 crores. Whereas Punjab also started in 2002 and 3, it started at 1,500 crores. It is loitering at 4,000 crores. Compare, from one department, a state earns 25,000 crores more. That is not 25,000 crores if you give it in the central schemes. And listen to this one. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਉਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। We actually used to take border ਦਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 10 ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। We would put 10 rupees and the government of India would give us 90 rupees. They changed. They said, now you put 40 rupees. We have nothing. We don't have nothing. And that's why all that development has stopped. So this is the problem. पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पर निजी जेबां जा रहे हैं।
वो दिखदा नहीं ना जड़ा उन्हां कोल जा रहे एंड दिस इज स्टेट मनी, दिस इज स्टेट मनी। हुण संजीवनी दी गल करदा भाई, जे मैं प्रॉब्लम दस रहा ते मैं संजीवनी दी गल कर, मैं बनाई रिपोर्ट, आई मेड द रिपोर्ट ऑन सैंड माइनिंग, आई वाज द हेड ऑफ द सब कमिटी which sent me to Telangana. I made it and I said 2 to 3,000 crores is minimum. A state which got separated from Andhra Pradesh in 2014 is earning 43 crores in 10 days. Listen to this. In 10 days, they're earning 43 crores. They've got one river. They've got one river, 300 kilometers of river. We've got 3 rivers. Punjab, land of the rivers. We've got 3 rivers, bro. And we earn 40 crores in 1 year. They earn 43 crores in 10 days. In 4 years, they earn 2,500 crores, and we in 10 years earn 400 crores. If I aim at the sun, I might hit the stars or the moon. But if I aim at the top of the tree, I will never get off the ground. Most failures stem from aiming too low. You're not going to be comparing yourself to those 40 crores that the last government was depositing. हर साल 40, ना 39, ना 41. देखो तुझी प्रकाष्ठा देखो चोरी, right? Where is that money going? Look, whatever is coming from the center becomes borrowing. It becomes debt unless and until you have income which you put in central schemes where it doubles up. For example, in the border sector, we used to have a scheme of the border area where we used to put 10 rupees and get 90 rupees. That scheme was changed to 60-40. So once it went to 60-40, we did not have the income to put 40 rupees and take 60. Now that is something absolutely, it baffles me. I cannot fathom that कौन ऐसा आदमी है जो 100 करोड़ कमा के उसे 100 करोड़ कर्जा लेके 100 करोड़ वापस करता हो और 100 के 200 ना बनाए, right? So whatever we are taking from the center becomes borrowings, becomes debt. And I bear ample testimony to the fact that there have been states which have been in the opposition, the southern states, they prepare their DPRs, they have funds, they have income, they are self-sufficient. समस्त उन्नति का आधार आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भर states. So they invest in those central schemes and double their income. I mean, it's foolish not to double your income. This is the only way forward. This is the way that states have actually progressed. Center-sponsored schemes to become self-reliant. Whatever we are taking in Punjab is becoming borrowing and is becoming debt. It's sad, it's very unfortunate, but it's true. Palleni tela kardi mela mela. And that is the cause which has brought us down, which has brought the downward slide, and that is what we need to reverse. And until and unless we hike up our income, until and unless we take it out of the individual pockets and fill the state's coffers, the state's exchequer, things are not going to improve. It's not as bad as it looks, it's worse. And the whole is larger than the parts. You look at the figures projected in our budget, we have about 13,000 crores annually allocated for agriculture. Now, the fact of the matter is, and as I always say, that facts will not cease to exist just because they're ignored. Almost 10,000 goes as subsidy. Whether it is groundwater subsidy, whether it is electricity, it goes there. फिर डिपार्टमेंट की तनख्वाहें देनी, बहुत कुछ ऐसा करना है, बाकी उसमें चला जाता है. तो बचता कितना है मेरे भाई? और बहुत कुछ हो भी रहा है, बचता कितना है? 200-300 करोड़. उसमें भाई क्या टेक्नोलॉजी आप खरीदोगे और क्या कुछ आप करोगे? फिर घूम फिर के फिर उसी सर्कल में बात आ जाती है. In spite of the fact that Punjab is allocating 13,000 crores, we do not have the kind of money to invest in the technology that you are looking at, which can actually transform us. Mechanical farming,
drip irrigation, all those things. We are looking at those, but funds is a problem. ਜਦੋਂ ਉਸ failed system ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, why can't we reinvent? Why can't we rethink? Why can't we redesign? And make no mistake about it, today it is a damage control exercise. It is a damage control exercise. But tomorrow, if this thing continues, this thing will become irreparable damage. Irreparable damage. 100 भेड़ों के आगे एक शेर लगा दो ना तो भेड़ें शेर हो जाती, और 100 शेरों के आगे एक भेड़ लगा दो तो शेर ढेर हो जाते. That is what a leader is. A leader converts weakness into strength. कमजोरी ताकत में तब्दील करता है. He converts weakness into strength, obstacles into stepping stones, and disaster into triumph.